Yes, I'm glad that films are being made on such subjects because these are lives that need to be shown to the world about how people with great adversity can also still be one of us. So I think that's great that such subjects are being picked. So have you seen the trailer of the film? Yes, I've seen the trailer. It's a really nice trailer, and I'm really looking forward to the film. Seems to be a very evocative film. I'm especially looking forward to Kalki's. Acting ability of Kalki. Yeah. So I'm especially looking forward to Kalki's job. And regarding your professional life, what are you doing? I mean, shooting for a movie? I just shot for a small film called Mo Maya Money in Delhi, and now I don't know next. It was a big some situation or any other movie, Hollywood movie or any other situation which made you to make this movie as well? I have a cousin who's a year younger than me, and she has a disability. And I think our myth is that those who are disabled or those who are in a wheelchair can't enjoy life, that they can't have a boyfriend, that they can't date, that they can't have a drink. And that's why it's called Margarita with a straw, that you can have a drink, but you need a straw just for you to have that. So it's like to explore this new territory, that somebody who's disabled can also have a normal romantic life. That we came up with this nice story of a teenager, it's just that the teenager happens to be in a wheelchair. We also got a lot of audience awards competing with Oscar films, the films that were up for the Oscars, because the Oscar competition was going on at that time. And she got one of the Best Actress awards at a festival where the boy who got the Best Oscar for Theory of Everything, Eddie Redmayne, and she got the Best Actress. So it's really an Oscar performance Kalki has given. And the high point of the film is Amir Khan and Kiran Rao both supporting the film in a major way. Especially Kiran Rao is very impressed with the script of the film and she liked the film and asked Amir to watch it. So what comment do you have to make on it? Amir and Kiran are enormously generous people who exist in this film industry, and the fact that they came on board, the fact that they love the film so much, that's why they came on board. It's from an attachment to cinema and not, because we personally know them or any such thing. What I love most is that how Amir said that, this is a film that needs to be seen by the whole country because it made me laugh and cry so much. It's so entertaining that I'm going to help you so that everybody in the country go on opening weekend and see the film. Are you giving a special screening for a disabled person? Is there a special screening for a disabled person? We are keeping not just a special screening, because special screening you feel that it's only for those in wheelchairs. We are preparing a special print for those who are visually impaired, who can't see. Because your thought is that somebody who can't see, how will they see a movie? But they see a movie by hearing it. So we're creating special audio track for them. So for the deaf, the blind and those in wheelchairs, special screening definitely in our second weekend we are planning. And we do wish that a day arrives when you don't have to do special screenings for disabled people and all our theatres become accessible to disabled people because they, I think, deserve equal right to watch all the films and not just Margarita with a straw. देखिए मैं I'm very intrigued by the title Margarita with a straw. It's a very interesting title and फिल्म तो मैं देख के बताऊंगा बिकॉज मुझे इसकी कहानी के बारे में कुछ पता ही नहीं है. मुझे बुलाया गया, मैं आया हूँ देखने के लिए. लेकिन आई पर्सनली फील कि काल्की हैज़ दिस पेंशेंट और a proper idea of picking up great roles और उनका एक अपना किरदार होता है, अपना स्टाइल होता है. And I'm very intrigued because she's a fine actor and I've always liked her choice of roles. जितनी भी फिल्में मैंने उनकी देखी हैं, her character is very well defined, very well edged. Or there is, I believe, Ranveer is also there in the film. Shonali, I think it's her first film as a director, and I'm looking forward to the film. और देखने का बताऊंगा मार्गरीटा विद स्ट्रॉ क्या होता है. जितना आप लोग क्यूरियस होता है, मैं क्यूरियस हूँ. सर आपकी बात की जाए, दम लाके हैशा में आपने 90 का म्यूजिकल फिर से दोहराया है, कुमार सानू को लाया है, क्या कहना चाहेंगे? क्या फिर से उस तरह का जादू आप दोहराने वाले 90 का जादू? देखिए उसमें 90s का भी था और कंटेम्प्रेरी सॉन्ग्स भी थे. एक तरफ अगर दर्द करारा जो आज चार्ट्स पर है बहुत ज़बरदस्त, और एक तरफ मोमो के धागे जो बिल्कुल अभी का गाना है. और इसका रिस्पॉन्स टू द म्यूजिक इन द फिल्म हैज़ बीन एनॉर्मस. और आई वुड से दैट यशराज फिल्म के साथ मैंने पहली बार काम किया है. शरद who's the director, मनीष शर्मा the producer, of course आदित्य चोपड़ा. I'm actually over the moon because इतनी बड़ी हिट हुई है फिल्म and especially music को बहुत अच्छा रिकग्निशन मिल रहा है. तो आई थिंक आई वेरी वेरी थ्रिल्ड अबाउट द रिस्पॉन्स टू द म्यूजिक. आपने सवाल पूछा है कि 90s का, मुझे अगर ऐसे सब्जेक्ट मिलते हैं, अब इस सब्जेक्ट का डिमांड था कि 90s का म्यूजिक हो और आजकल का म्यूजिक हो, तो दोनों का अमैलगमेशन मैंने बहुत मेहनत करके किया है. एंड आई वुड लाइक टू थैंक द पीपल
who have loved the music and loved the song. तो आगे भी जो सब्जेक्ट एक तरह से तो आप 90 के म्यूजिक रिपीट करेंगे? I depends अगर ऐसा फिल्म का सब्जेक्ट होगा, लेकिन लेट मी टेल द पीपल आउट देयर कि मोमो के धागे से आपको अंदाजा तो हो गया होगा कि अगर आज की फिल्म में भी जो म्यूजिक बन रही हैं, जो बड़े बड़े अच्छे डायरेक्टर्स हैं, उनके साथ मैं वैसा म्यूजिक करूँगा एंड जैसी फिल्म का सब्जेक्ट होगा मैं वैसा म्यूजिक दूंगा. बट हाँ, ये भी कहना पड़ेगा कि 90s का म्यूजिक कभी गया नहीं था, वो आज भी लोगों की रोम रोम में है. एंड पीपल जो रिएक्शन भी है आज टॉप 10 में, यूके के टॉप 10 में, इंडिया में हो, कहीं भी यूके, यूएसए, कनाडा जाइए, टॉप 10 सॉन्ग्स के अंदर दर्द करारा आता है एंड टॉप 10 सॉन्ग्स के अंदर मोहम्मद के धागे आता है. आई थिंक दैट्स अ वंडरफुल फीलिंग फॉर अन्नू माले, फॉर आदित्य चोपड़ा, फॉर यशराज फिल्म एंड फॉर दमला की आयशा एंड एवरीबडी कनेक्टेड विद इट. और 90s की फिल्मों की बात की है तो 60s, 70s, 80s में शशि कपूर साहब जो थे उन्हें हाल ही में दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया था. कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए? बहुत बड़ी बात है. आई ग्रू अप वाचिंग शशि साहब एंड व्हाट अ ग्रेट बैंड, व्हाट अ ग्रेट परफॉर्मर. और उन्होंने जो काम किया है, दादा साहब फाल्के अवार्ड उनको मिलना ही था. राइट फ्रॉम द टाइम जब वो छोटे थे, जब हम बहुत छोटे थे और हमने उनका किरदार देखा था आवारा में, यू नो दैट राज साहब का जो बचपन उन्होंने प्ले किया था, वहाँ से लेकर टू ऑल माय फेवरेट फिल्म. और अचार कितनी फिल्में हैं, लेकिन पता नहीं म्यूजिकली शर्मिली की याद आती है. एंड उनका मैन एंड जब जब फूल खिले अचानक याद आते हैं, यू नो, म्यूजिकली. So I think Shashi Kapoor Saab has deserved it and God give him long life. He's a super human being, a great actor, and one of the nicest person I ever met in my life. Thank you so much. Part of this movie, when the script was proposed to you, how come for you to act in the movie at first? I think I loved the script immediately. I thought it was a very original and beautiful script. You know, very rarely do we see a mainstream story about disability, and it is a mainstream story. It's full of laughter and as well as drama. And I think I always loved it. It was just I was terrified at the beginning that I would be able to do. Would I be able to do this? That was my question. What about you? What will you make you be part of the movie? Actually the same. I was blown by the script and the concept, and it's a very sensitive film. It's also a very fun film, and it's a very difficult balance to make, and I think the film manages to. And Chinali, the director, is absolutely fantastic, and she's managed to make it. And I was again very, I was not sure if I can pull off the part, because it does have a disability. I play the character of a blind person, and so yeah, but I think the film's turned out really well. Everybody's loving the film, and the rest is for you guys to watch it. Kalki, it's not an easy role to play. What kind of research do you do to play that role? I was introduced to Malini Chip, who's my the cousin of my director, Malini Chip, and she has cerebral palsy, so I worked very closely with her. I got to live with her, follow her around, and then I worked with her physiotherapist, speech therapist. I also did a workshop with Adil Hussain, the actor, working on the physicality and the psychology, and I spent a lot of time in the wheelchair. The essence of my practice was that, spending 1 hour a day for 6 months on the wheelchair. Amir and Kiran are putting the movie in a big way. So is this a big boost for the film? I mean, yeah, I think it's wonderful that they're promoting the film and they're here because they love the film, and it's helped us in a big way. Yeah. Thank you. मैं अभी कुछ नहीं कह सकती. मैंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सुनी है इसके बारे में, और मैं नॉर्मली ट्रायल पे नहीं जाती हूँ, आप मुझे कभी नहीं देखेंगे, बट आई हैव टू कम टू दिस. सोनाली इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड. I think we should encourage movies like this. She's a co-woman director, so I'm here to show my support for the film. Ma'am, Bollywood so much about masala kind of films. हाँ जी. ये experimental film एक quality environment ला रहा है Bollywood में. ये पता नहीं एक्सपेरिमेंटल है, ये मे बी वेरी एंटरटेनिंग फॉर ऑल. अभी तक मैंने देखी नहीं है फिल्म, लेकिन हर टाइप की फिल्म आनी चाहिए, एंड ऑल टाइप्स ऑफ फिल्म शुड डू वेल, क्योंकि अभी हमारा
मामला डावाडोल है बॉलीवुड में। आपने अपनी जितनी भी फिल्में बनाई हैं सारी एंटरटेनमेंट से भरी होती गाने होते हैं डांस होते हैं, आप ट्राई करेंगे कि किस तरह की बाय नॉट, अगर मुझे अच्छी स्क्रिप्ट मिलेगी ऐसी और मुझे लगेगा कि ये बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है, मैं इस पे बना सकती हूँ, तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। लेकिन क्योंकि क्रिटिक्स चाहते हैं कि मैं ऐसी फिल्म बनाऊं, वो प्रेशर से कभी मैं नहीं बनाऊंगी। इफ आई लव द स्क्रिप्ट आई श्योरली मेक इट। हाँ, मैं जाके भी आ गई हूँ। हाँ, तुम्हें चला। अच्छा, हैप्पी न्यू ईयर टू अभिषेक बच्चन जी लिख रहे हैं। वो उन्होंने कहा है अब उसका जिम्मा उन्होंने लिया है, वो लिखेंगे पार्ट 2, और मुझे स्क्रिप्ट पसंद आएगी तो हम बनाएंगे हैप्पी न्यू ईयर पार्ट 2। नहीं, मैं डायरेक्ट करूँगी। ठीक है, थैंक यू। या फ्री में दिखाना पिक्चर, ये तो बहुत अच्छी बात है। पहले तो ये क्योंकि कल की जब ये फिल्म शूट कर रही थी तो बहुत मैं और मेरी बीवी के साथ डिस्कस करती थी, बहुत एक्साइटेड थी, बहुत काम किया उसने, बहुत तैयारी की है उसने। तो प्रोसेस में हमने देखा है कि कितना उसने परिश्रम किया है। तो आई थिंक मैं बहुत टाइम से एक्साइटेड था इस फिल्म को लेकर, क्योंकि बहुत लोगों ने जिन्होंने इस फिल्म को पहले एक रफ गाइड वगैरह देखा था, उन्होंने कहा था कि बहुत अच्छा काम किया है कल्कि ने, बहुत बढ़िया फिल्म है। तो राधिका, आपने बदलापुर में रोल प्ले किया, एंटरटेनिंग रोल प्ले किया, इस तरह के फ्यूचर में अगर ऑफर आएगा तो कर सकती हैं आपने? क्या फिल्म है, अगर सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग होगा तो ऑफ कोर्स आई विल बी विलिंग टू डू इट। और एक्टिंग के बारे में क्या कहेंगे कल्कि के, किस तरह के? Actually, I'm very excited to watch this film because I think a subject like this has not been attempted many times before in films, and at least I haven't seen many. Kalki and Shari both are one very dear friends, but secondly extraordinary actresses, and I've heard so much about their performance that is so good, so I cannot actually wait to watch it. I haven't seen it yet. आपसे पूछना चाहूँगा, ये एक पॉजिटिव माइंडसेट हो रहा है व्यूअर्स का, अलग अलग सब्जेक्ट्स को वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, हंटर हो या ये फिल्म हो, वो सेम मसाला फिल्म देखने से अब लगता है कुछ भी आप क्या कमेंट कर देंगे इस बारे में? ये हर किसी का टेस्ट अलग होता है ना, तो ये तो बेहतरीन बात है कि हर अलग अलग किस्म की फिल्में बन रही है और हमारी जो ऑडियंस है उसके लिए एक टेस्ट भी दिखा रही है, तो हम जैसों के लिए ये बहुत अच्छी बात है। आपका टेस्ट क्या है? हंटर तो मार्गरीटा विद द स्ट्रॉ। जी, हाँ, मैंने सुनी है अभी बातें, नहीं, it's good. I think it's really good after a long time, you know, films are released, because हंटर 2 साल से मतलब हम बना रहे हैं, तो खुशी तो बहुत है। और ये साल भी बहुत अच्छा रहा है, जो NH10 है, दम लगा के हैशा, बदलापुर, हंटर, मार्गरीटा, कोर्ट, I mean every 2 weeks there's something amazing to watch, so it's been great. It's good to be a part of that. आप बोलो, आप करोगे? कास्टिंग कर रहे हैं सन ऑफ हंटर, छोटा सा बच्चा। Thank you. हैप्पी न्यू ईयर और फारा के सारे मूवीज के बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं लॉस एंजलिस में जब हैप्पी न्यू ईयर का रिलीज हुई, फर्स्ट शो पे मैं गई थी, हाउसफुल, अकेले बैठ के मैंने देखा, मुझे इतना अच्छा लगा। एंड सो मेरे लिए सच ए ह्यूज ऑनर एंड एक्साइटमेंट टू हैव फारा खान, another woman director, but a huge success in this country. It's so wonderful for women when there's a majorly successful woman director who makes 100 crore films and is part of that 100 crore club. थैंक यू सोनाली। एंड मैं यही कहना चाहूँगी, मैंने अम्मू भी देखी है, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मार्गरीटा विद द स्ट्रॉ, क्योंकि इसका बज़ इतना बढ़िया है। जैसे मैं कह रही थी, आई नेवर गो फॉर ट्रायल शोज, वेरी रेयरली, लेकिन सोनाली के लिए Sonali के लिए we have to come and we have to show our support for the movie, and I'm sure it's during जिसने भी देखी है, आमिर का ट्रायल पहले हुआ था, everyone has great things to say about the movie,
So now we really want to go and see the movie. Thank you. नहीं, हम ये फिल्म पूरी कंट्री को दिखाना चाहेंगे। हाँ, पूरी कंट्री को। अमिताभ बच्चन ने अभी दिल्ली में देखा और अभी हम इंडियन ऑडियंस को दिखाना है। हाँ, अंकल अमित का वो बहुत उनको वो रो के निकला बाहर वो स्क्रीनिंग से। और चाहेंगे पूरी कंट्री पैसे खर्चा करके ये फिल्म देखे। फ्री में आप बहुत दिखा लिया आपके साथ। मैं कह रही थी अमिताभ बच्चन ने भी देखा, जय बच्चन ने भी देखा, उनको बहुत पसंद आया और सच्ची में अभी मैं इंडियन ऑडियंस को दिखाना चाहती हूँ। रिचा, आपने भी अपने कैरेक्टर जो शुरुआत की थी काफी स्ट्रॉन्ग रोल से शुरू की थी, ये जो रोल में भी कोई आम रोल नहीं, काफी स्ट्रॉन्ग रोल है। स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करने में कितना चैलेंज होता है आर्टिस्ट को? आई मीन एक ऑथर बैक रोल प्ले करना हमेशा मुश्किल होता है, और ख़ास करके ऐसे हम स्पेशली एबल लोगों की कहानी बनाते हैं और डिफिकल्ट थीम की फिल्म होती है, सेक्सुअलिटी वगैरह को डिस्कस करते हैं, तो मुश्किल होता है। आई एम सो वेरी जॉब। अभी फिल्म में ट्रेलर देखा जी, आपको कैसा लगा? मतलब कुछ अलग है कि ये? जी बिल्कुल, मैं स्क्रिप्ट से भी वाकिफ हूँ और मुझे पता है कि बहुत अच्छी फिल्म है। कल्कि इसके लिए ऑलरेडी काफ़ी सारे अवार्ड जीत चुकी हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि फिल्म चलेगी, लोगों को पसंद भी आएगी। इंडस्ट्री की कितनी अच्छी बात है, पॉजिटिव इन्वायरमेंट आ रहा है, अलग अलग सब्जेक्ट की फिल्में बन रही है, एक्सेप्टेशन भी हो रहा है, कितनी अच्छी बात है ये। आपके भी बोल रहे हैं पॉजिटिव, लोग एक दूसरे को अप्रिशिएट कर रहे हैं, एक दूसरे की बातों में जा रहे हैं, तो डेफिनेटली इट्स गुड थिंग। आपके प्रोफेशनल में क्या चल रहा है? आप शूटिंग कर रहे हैं या करने वाली है? मैं बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग करके फ्री हुई हूँ और मैं कुछ फिल्म की शूटिंग करने वाली हूँ और आज मैं अपनी बात नहीं, अपने दोस्त की बात करने आई हूँ जिनका नाम है कल्की। तो थैंक यू।